हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त बढ़िया। तो आज हम फ्लाई करने वाले हैं हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आज हमारे पास एयरक्राफ्ट है PMDG का 737-700। आपको एक बार इसका बाहर का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। This is SpiceJet library I have installed and this is real life flight. यहाँ पे मैं आपको फ्लाइट प्लान मिला है हैदराबाद VOHS to VIDP दैट इज दिल्ली। ओके, SpiceJet 160 कॉल साइन है हमारा। सेम ट्रिप से पूरा प्लान कर दिया है हमने। ओके, एक बार इसको सेम जैसे हर बार मैं फ्लाई करता हूँ वही आईवाओ से कनेक्ट करूँगा अभी उसको। ओके, सो फ्लाइट इज़ कनेक्टेड टू दी वर्चुअल एविएशन। ऑलराइट, सो अभी आप देख रहे हैं पूरा एयरक्राफ्ट हमारा कोल्ड एंड डार्क स्टेट पर है। सो लेट्स जंप बैक टू इन द कॉकपिट एंड initiate pre-flight checklist, then start with the engine. बस बैटरी ऑन करते हैं अभी। हाँ, यस, दिस इज द बैटरी कार्ड। इसको हम ऑन कर देंगे। आप देख रहे हैं थायराइड सप्लाईज ऑन हो गए हैं। ओके, बैटरी का पावर यहाँ पे साइट है। स्टैंड बाय पावर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी हमें टर्न ऑन ऑल इमरजेंसी लाइट्स एंड ओके, यहाँ से हम ग्राउंड पावर ऑन करेंगे। ग्राउंड सर्विसेज, ग्राउंड पावर रिक्वेस्ट। Okay, let's check the outside. Alright, so we can see this is ground power unit is connected to the aircraft. Let's jump back to and turn on the ground power. हम यहाँ पे ऑन कर देंगे इसको। ओके, अभी पूरा एयरक्राफ्ट हमारा चल रहा है ग्राउंड पावर से। लाइट्स, पैनल्स एंड एवरीथिंग ऑन कर देंगे हम। चलिए, इससे पहले हम यहाँ पे IRS को अलाइन कर देते हैं। ओके, डन। ओके, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्ट। ऑलराइट, चलिए फ्लाइट डायरेक्टली ऑन कर देते हैं। ब्राइटनेस, लाइट्स एंड ऑल। चलिए, ओके, यहाँ पे मेरा पार्किंग ब्रेक वर्क नहीं कर रहा है सही से। आई डोंट नो द रीज़न एक्चुअली, बट नो वरीज, हम मैनेज कर लेंगे बाद में इसको। ओके, ट्रांसपोंडर हमें सेट करना है 122 पे डाल देते हैं अभी। 122.8 पे। चलिए, नो कंट्रोलर इज अवेलेबल करंटली। चेक द ओके, वर्क्स परफेक्ट। अभी हम यहाँ पे हमारा पोजीशन डाल देंगे। ओके, शोइंग ओवर हियर रेफरेंस पोर्ट A VOHS
ट्रांसपॉन्डर डाल देते 1000 पे। चलिए हमारा रूट यहाँ पे लोड हो रहा है। तो बाकी का काम कर लेते हैं, फ्यूलिंग एंड ऑल अभी बाद में सेट करते हैं। Okay, let's start the APU now. Okay, we wait for some time till the APU start up, then we back on the APU power. Okay, perfect. Weather radar on. Sounds. Set to 1000. Okay, यहाँ पे सब वार्निंग्स है। APU power warning. I'm trying for this parking brake, but it literally goes off itself. ओके, सो रूट हमारा लोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्स में जाके पूरा हमारा फ्लाइट प्लान है अभी का। ओके, सो लेट्स बैक टू द our flight plan. Okay, so total fuel we required as of now 7.8 tons, 7,800. तो यहाँ पे हम फ्यूल ऐड कर देंगे 7,860 डाल देते हैं, बट इट्स शोइंग इन दी pound form. We have to change it in the kilograms. So let's go back to the equipment. How to find, actually I'm trying this aircraft after so long time, so थोड़ा बहुत सेटिंग है, हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अभी फोकस करना है फ्यूल का जो ओके डिफॉल्ट लेवल। लेट्स कीप इट टू फ्लाइट लेवल 55। ओके, आई थिंक इट शुड बी द डिस्प्ले पैनल। डिस्प्ले में ही होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स में हमें कर देना है सेट। चलिए, सो लेट्स गो बैक टू अगेन फ्यूल सेक्शन एंड fuel required 7851. Let's keep it 7860 and add. Okay, so you can see 37% of fuel we have right now. Okay, बाकी सब कुछ ओके, डोर क्लोज कर देते हैं इसको।
सेलेक्ट टू। चलिए रनवे अभी हमें यहाँ पे सेट करना है। डिपार्चर रनवे हमारा रहेगा फ्लाइट प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं VOHS 09 राइट। सारे एयरवेज इसमें डायरेक्ट किया है, आई डोंट नो द रीज़न। ओके सो it's already filled automatically since I have already loaded into the folder and loaded from the FMC. So departure अभी हमारा रहने वाला है 09 right। Let's 370 flight level will be 370 09 right। Let's check the next waypoint is Nadel Busco. Okay, so let's see. It's not showing anything over there, so we keep it as it is and let's set the arrival दिल्ली में हमारा रहने वाला है 28। यहाँ पे ओके सप्लो इज अवर स्टार, so let's do it and the star will be okay। I'm a bit confused with this SP5E or SP5L। let's keep it SP5E and execute। check the legs once। ओके लेग्स चेक करते वक्त हम यहाँ पे प्लान पे डाल देते हैं एंड थोड़ा सा आउट कर देते हैं। ओके तो ये हमारा ओके यहाँ पे अभी एयरक्राफ्ट है टेक ऑफ एंड देन स्टेप्स पे काउंट करेंगे हम 1 by 1 यहाँ पे मूव करेंगे। लेट्स चेक समवेयर शोन ब्लैंक और नॉट, तो हम उसको क्लियर कर देंगे वहाँ पे। चलिए हमारा ऑलमोस्ट हाँ ओके अभी यहाँ पे इस पे भी चेक दिस राउटिंग अगेन। हम SP एंड B को रिमूव यहाँ पे कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके डायरेक्ट हम सेंड भी नहीं चाहिए हमें। ओके जो CI-28 हम यहाँ पे लोड कर दे रहे हैं यहाँ पे 29 पे। लेट्स चेक इट अगेन। ओके परफेक्ट राउटिंग। चलिए थोड़ा FMC में प्रॉब्लम लग रहा है, आई डोंट नो द रीज़न बेसिकली बिहाइंड दी ओके सो थोड़ा मैन्युअली हमने फ्लाइट प्लान को एडजस्ट कर दिया है। चलिए सो सब कुछ अभी सही दिख रहा है। ओके हम इनिशियल क्लाइंब अभी रहने देते हैं। लेट्स कीप इट फ्लाइट लेवल 370 दैट इज अवर क्रूज अल्टीट्यूड। ओके परफेक्ट अभी इनिशियल रेफरेंस में हम जाएंगे। ओके ओके ग्राउंड वेट एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, सो वी जस्ट load it। it's not showing okay plant flow showing 7.9 kilogram, 7,900 almost। okay and let's keep the plan to 70। our reserve will be 0.9 I'm sorry 0.9 0 fuel weight। okay ground weight यहाँ पे हमें मिल गया है। cruise altitude is 370। cost index हमारे
सेम ब्रीफ में भी आज शो नहीं कर रहा है, बट लेट्स कीप इट अराउंड 10. Okay. Cruise and wind we find from this our flight plan. Okay, so we find here flight level 370. Okay, so 284, and the wind direction is 029. 284, 29. Okay, ट्रांजिट एल्टीट्यूड हम यहाँ पे चेंज कर देंगे. लेट्स कीप इट 5500. Okay. Yeah, this is outside. Air temperature is 25 degree. We add 5, so we keep it 30 degree Celsius. Flaps we take 5. Center of gravity calculate itself. Okay, we are is 130, V2 136, so we keep it 140 here roughly. Okay, इधर रडार इस साइड का भी ऑन कर देते हैं. Okay, everything seems perfect. Let's back to the map option and let's zoom out a bit. So हमें यहाँ से टैक्सी करके इधर लाइन अप करना है. We go to the left, so basically the direction Okay, seems good. Okay, we have APU on. Okay, everything back to the on the APU power, and we turn off this ground power. चलिए ऑफ है. ओके, यो डैम्पर ऑन कर देते हैं यहाँ पे. Okay, let's check the generator. APU is showing everything is perfect. चलिए, window hit on. We don't require this anti-icing right now. चलिए, एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है. This should be on the auto mode, and here we add 370. It will go cruise temperature. So land altitude, let's keep it around 50 right now. Sure, everything seems okay. And yeah. Okay. सारे फ्यूल्स ऑन कर देते. फ्यूल पम्प्स आर ऑन. विंडो इज नॉट रिक्वायर्ड. Okay, seems good. It's not working. No worries, so let's plan the pushback. Let's keep on loading. Okay, no worries, it's not loading the area. Okay, we can see actually the whole airport structure over here, and we can plan our pushback accordingly. But yeah, okay, so we start manual pushback. We don't require this stairs. Let's see if it gets off or not. Okay, it's not working on this airport. Maybe okay, so yeah, we got our pushback vehicle here. I think it's still not working. Let's see if we can do anything from this FMC. So,
Yes. V2 is not required to call out, that is fine. Okay. Alright, so it's not showing in this option, simulation. Okay, performance is not at all required. Yeah, we all check all those stuff, but okay, fine. So let's back to the legs and check the outside and see. Okay, pushback is same, but okay, we have to push back manually. Okay, let's see reverse. Oh my god, it's taking the everything. Okay. I forgot to display this power, so it's gone there. Okay, so we have to face to this direction. Okay, till that we something seems weird with this pushback tug and all, but no way. So let's start the engine and we start with the engine number 2 first. Okay, we done with this direction, right? Okay, let's reach to 20% and then we start number 2. Okay, starting. Let's find the direction. Okay. Hopefully it won't crash my aircraft because I have selected the hard option. So if aircraft gets stressed, so the game will be stopped. Okay, engine 2 is stable and start number 2. Okay, let's stop our pushback here. Parking brake is not working at all. Okay, reach 20% and starting number 1. So this stuff. Okay, bye bye guys, thank you for your wonderful service. Okay, we turn on the lights. Okay, this is center fuel pump. It's not required because we have no fuel in the center. It's very low in the amount, so we keep it off. Either we can turn it on till the those remaining fuel get finished. Okay, engine number 1 is also stabilized. We turn on this generator on, both generators on. Perfect. Let's turn on this. Perfect. Okay, check the generator power, both sides working perfectly. Okay, keep it to alternate and okay, everything is not required. Let's turn off the APU off. Okay, turn on the taxi light.
Perfect. Okay, as parking brake is not working, we have to. Okay, L is not engaging as of now, but no worries. After flying, we turn this L name on. Okay, let's set the flap to 5. Okay, some message I can see on this. Verify takeoff speed. Okay, check the takeoff speed. That's perfect. Okay, it's changed. 137 is V2. Let's keep it 145. Done. Okay guys, so we have no active ATC available right now, so we'll start taxing. Okay, flap side to 5, taxi light on. Okay, let's check the recall. Perfect. Okay, so I apply a bit of thrust here. Okay guys, so this is Shamshabad Airport, Hyderabad. Of course, scenery is great. To the cockpit and yeah. Look at the shadow guys, it's unbelievable. I think we have to backtrack the runway 09er right. So we taxi, we use the runway 09er left as the taxiway. Okay, ground speed. Let's increase a bit of thrust. Okay, slow down. This PMTG 737 is more what we can say, the maneuvering on this taxiway is very smooth. I was flying the A320, that was the fly-by-wire simulations, and the handling was while ruddering, like maneuvering on the taxiway, that was a bit hard, and it's very smooth over here. Okay, let's stop here. Yeah, of course the runway is not in use in real life as well, but protocol we have to turn these lights off, and yeah, everything other source systems normal. Okay, we have to turn on this to RA mode. Okay, perfect. Okay, that's adding bits of thrust here and lining up the runway number 09er left. I will be turning to the right, so it will be considering as runway 27 right. Yeah, I just turn on this clock. Turn on, right, sorry. Okay, heading to the right, and yeah, lining up the runway 27 right.
On the left side you can see this is our runway 09er right. We turn left from this next taxiway. Okay guys, now you can see the runway 09er left on my screen, and I turn on the right. I backtrack the runway 09er left. With the correction, I backtrack on runway 27 right, and then turn my aircraft on 09er left and line up. Okay, there was another taxiway, but I was not sure there should be, so I line up. Okay guys, so I take the U-turn over here and swing down my airspeed, ground speed, sorry. I'm adding more thrust over here. It's not turning well. Okay, seems good. It's early in the morning, guys. You can see the sun. Okay, perfect. 090 heading, and we apply full thrust here. Okay, let's take off, guys. Airspeed's alive. Airspeed alive. 80 knots. 80 knots. Checked. V1. Rotate. Checked. Rotate. Positive rate of climb. Positive climb. Geared up. Flaps 2. Speed check.
bank angle, turning left, flaps 1, flaps up, speed check, okay. I just turned the autopilot on. ILNAV is still not working, but no worries. Okay, passing 5,500 feet. Altimeter standard. ILNAV is alive. Okay, let's fly direct, Khushbu. Passing 10,000 feet, lights off. Okay guys, I'm just changing the sound effect. It's sorry, temperature setter option. Okay, I think there is no sound option. Maybe okay. I don't get any sound option because it was so high on the outside. Yeah, but inside is fine. Yes. Performance. Okay guys, so there is no any sound option for this. Okay, yeah, no worries. Let's back to the FMC. Alright, so guys, we have to go from the Hyderabad and we are on our way to Delhi. So yeah, so you can see this is TD and the TC, that is top of climb and top of descent. So once we reach around this VOHS, then we guys see you back in few time. Alright, 0305 Zulu
showing 679 miles remaining. So the time is 1:22 and we'll be reaching by 03:05. So let's almost 1.5 hours. So see you guys after 1 hour, 1.5 hour almost. Bye bye. Okay guys, welcome back. अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने आए हैं VOHS. सो टीडी हमारा करीब है 49 माइल्स. सो थोड़ा बहुत हम डिसेंट के लिए अभी प्रिपेयर कर लेते हैं. लेट्स गो टू लेक्स. अभी सो डिसेंट हम करीब ले लेंगे 13,000 फीट पे. ओके, अभी एंगेज नहीं करते उसको. चलिए बाकी सारी प्रोसीजर देख लेते हैं यहाँ पे. काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट है, हमें कुछ ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. अब यहाँ पे देख रहे होंगे ILS 110.50 दिखा रहा है. VOR 113.90. तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ. ओके, 110.30. ओके, चार्ट अभी मेरे पास नहीं है, बट लेट्स कीप इट टू ब्रीफ ओनली. ओके, 284 क्रूज दिखा रहा है. मतलब उसका कोर्स दिखा रहा है, सॉरी नॉट क्रूज, कोर्स है उसका रनवे का. तो हम यहाँ पे उसको ले लेते 284 पे. दोनों साइड कर देंगे. ये चीज़ हमें जब हम लाइन अप करने जाएंगे तब काम लगने वाली है. ओके, 284 साइड. रनवे हमारा 29 है, तो उसका जो हेडिंग रहेगा वो 284 डिग्री रहने वाला है. तो इसलिए वो हमने यहाँ पे 284 साइड किया है. लेट्स टर्न ऑफ दिस स्टफ. चलिए ठीक है, एयर कंडीशन ऑफ किया हमने. ओके, तो करीब हम पहुँच गए 30 माइल्स फॉर TD. तो अभी हम यहाँ पे डिसेंड स्टार्ट करेंगे. थोड़ा ओके, एक बटन यहाँ पर है, हमें वो प्रेस करना था. तो यू कैन सी गाइस स्टार्ट डिसेंडिंग. ओके, कैलकुलेशन वो अपने आप FMC थ्रू ही करेगा. जो इसका रेट ऑफ डिसेंट है अभी करीब 1200 1100 अराउंड पहुँच रहा है. 1000. ओके ओके, स्पीड के ऊपर अकॉर्डिंग वो साइड करता रहेगा हमारा डिस्टेंस के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से. ओके, और कुछ ज़्यादा हमें अभी सेट नहीं करना है. ओके, फ्लैप्स हम फुल कर देंगे जब लैंड करने वाले 40 डिग्री. स्पीड हमारा करीब रहेगा 130 का. ऑलराइट, बाकी कुछ यस, दिस इज परफॉर्मेंस इनिशिएट. ओके,
की ज़रूरत नहीं है, और जब हम टेक ऑफ करने वाले थे उसके पहले करने स्टार्ट करने चलिए। और तो ऑटो ब्रेक डाल देते हैं 2 पे।